Afternoon, and we start our session. Today's session is on regarding the Center of Excellence activity that we do very regularly. Every month, we have a expert who takes up a topic and tries to cover the topic as a whole for everybody to understand. So today's topic is tuberculous lymphadenitis, and it will be taken by Dr. Prapreet Sethi. She's a senior pulmonologist at our institute and has a vast experience in treating the patients for TB, pulmonary TB, as well as extrapulmonary TB. So over to you, Dr. Sethi, for your lecture. Thank you so much. I welcome you all, and we'll today discuss about tubercular lymphadenitis. As you know, everyone is aware that the treatment of pulmonary tuberculosis, just not the treatment, but diagnosis and treatment is comparatively easier as compared to extrapulmonary tuberculosis, where the diagnostic part also and therapeutic, the treatment also, it's not different. It's the same drugs have to be used, but they do pose some challenges. So in today's scenario, when you know, in extrapulmonary tuberculosis, lymphadenitis, that is lymph node tuberculosis, is the commonest, and we'll try and cover that part in today's presentation. So as you know, lymph node, I've already said, is one of the commonest presentation of extrapulmonary tuberculosis in India. It is almost around 35% of all the EPTB cases. And it is responsible for up to 43%. Peripheral lymph node can be due to different causes. But TB as a causative agent is present in almost 43% of peripheral lymphadenopathy. And in rural India, the prevalence of TB lymphadenitis in children up to 14 years of age is approximately 4.4 cases per 1,000 cases. Amongst these tubercular lymphadenitis, the most common list, which you must have seen in your clinical practice, is the cervical adenopathy. Then followed by the patients can have axillary lymph node, can have inguinal, can have abdominal, that is mesenteric, and mediastinal involvement. In addition to just the lymph node swelling, these patients can have other symptoms like fever, shortness of breath. Depending upon the symptoms, would depend upon the organ or the system which is involved. If it is the chest, the mediastinal lymph nodes, then the patient can present with cough, can present with shortness of breath. If it is the abdominal, which is a cavity which is involved, and the lymph nodes are mesenteric, then you could have pain in abdomen, distension in abdomen. So these all depend upon the organ which is close by, which is the organ actually is the lymph node, but the other systems which are close by are affected. So we've covered almost this. The epidemiology of TB lymph varies. It is different, definitely, between the developed and the developing countries. In the earlier phases, TB lymph node was said to be considered to be a case of a disease of the childhood. However, now the peak age, as you've seen, has shifted from childhood to ages of 20 to 40 years. And extrapulmonary tuberculosis is again common in those patients who have immunosuppression. It could be because of some medication, but HIV being one of the commonest causes of immunosuppression, you will have extrapulmonary tuberculosis can be seen in these patients quite frequently. And these are seen when the HIV patients have a CD4 count of less than 300 cells per microliters. Now for the pathogenesis, isolated peripheral TB lymph node is usually due to reactivation of a disease at a site which seeded hematogeneously during primary TB infection, perhaps years earlier. So once patient must have inhaled TB bacilli, must have contained the infection, and these infections later on, once contained, can flare up due to any other cause. Or later in the life, due to immunosuppression, there could be a flare up of this disease and can present as EPTB or extrapulmonary or TB lymph nodes.
Though most cases of TB lymphadenitis occurs in the setting of reactivation, that is what we've explained just now, miliary dissemination with prominent lymph node involvement in the setting of primary infection can also occur. And this kind of a setting where they have a primary extension or primary infect setting of in the setting of primary infection is seen in immunosuppressed patients and in children. So what is the presentation? In the presentation, the initial stage of superficial lymph node involvement, progressive multiplication of Mycobacterium tuberculosis occurs. The onset of delayed hypersensitivity is accompanied by marked hyperemia. That is, there could be redness in that area. There could be a swelling. Slowly and steadily, there could be necrosis and caseation and softening of the nodes. This can be then spread the surrounding area. ये तो सिर्फ एक once the lymph node is there, swelling is there. If the surrounding area is also involved, there is inflammation, matting of other lymph nodes in the same group, adhesion to the adjacent skin, which could lead to induration and purplish discoloration of the skin. The center of the enlarging gland becomes soft and caseous material and can rupture if after the formation of a sinus can occur. So this is kind of a extension of what I've already explained कि stage 1 में आपके पास सिर्फ एक lymph node रहेगी जो थोड़ी सी एक swelling करके present करती है, जिसमें एक enlarged, firm, mobile, discrete एक lymph node आपको feel होगी. अगर आप patient आपके पास आता है, आप देखेंगे तो एक सिर्फ एक swelling आपको नजर आएगी. अगर cervical, most commonest presentation is cervical lymph node, जहां आपको एक plain swelling नजर आती है. नेक्स्ट उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसके आसपास की जगह भी उसमें पेरीएडिनाइटिस जो कहते हैं कि लिम्फ नोड के आजू बाजू की जगह में भी इन्फ्लेमेशन होती है और अंदर की जो मटीरियल है देयर इज केजिएशन यानी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है. बीच का पार्ट सॉफ्ट रहेगा, आजू बाजू का थोड़ा सा रेडनेस और एडहेरेशन होना शुरू हो जाता है, स्किन पकरिंग होनी शुरू हो जाती है. देन धीरे जब आप फोर्थ स्टेज में आप देखेंगे कि ये जो हो रही है अल्टीमेटली रप्चर होएगा, स्किन को पुश कर रही है स्टेज 4 में. स्टेज 5 में जो भी पस आपका अंदर लिम्फ नोड का था, इट हैज रप्चर्ड आउट एंड देयर इज अ साइनस फॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लिम्फ नोड एनलार्जमेंट. आप जैसे ये फोटो देखेंगे, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टॉप मोस्ट इज जस्ट अ स्मॉल स्वेलिंग. This is probably the stage 1. The patient is presenting with just the swelling. Now, if on the topmost right side, अगर आप देखेंगे, so you will see there is some kind of rupturing of the abscess. Skin पूरी लाल हो गई है, उसमें से आप देख रहे हैं कि पस निकल रहा है. So this is the cold abscess stage. Now, left hand side lower में देखेंगे तो ये healed आपको एक scar formation दिख रहा है जो sinus बन के ट्रीट सूख गया है. सो देयर इज अ स्कार फॉर्मेशन. सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस. जब आप पेशेंट को देखेंगे अपने प्रैक्टिस में, आपको ये किसी भी स्टेज में इसमें मिल सकता है जब आपको डायग्नोसिस में करना पड़ेगा. So now, if this is how the patient presents, if it is just a lymph node swelling, but what are the other symptoms that the patient can have? So it usually will definitely depend on the site of the lymph node or immune status of the patient. If the patient is immunocompetent, then usually the patient will present just with an isolated swelling and complaints related to that swelling. Systemic symptoms would be less in a patient who is immunocompetent. But if some patient who is immunocompromised, usually in our setting, you have seen they are usually HIV positive. In these cases, you will have patients who will have other symptoms also, constitutional symptoms like cough, fever, weight loss, and other symptoms can occur. And if the patient, when you examine the patient, you will see that, as she already discussed, there would be a small swelling. It could be, when you see, it could be matted with different group of lymph nodes all together. There could be scar formation, sinus formation. There would be pus discharge, cold abscess, depending upon the stage of the development of the lymph node you could see. However, if this area which it involves is the mediastinal lymph nodes, sometimes it will happen the mediastinal lymph nodes जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो आपके ट्रैकिया अपर एयरवे को कंप्रेस कर रहे हैं. उस टाइम में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो सकता है. और अगर बाय चांस वो रप्चर हो जाता है ट्रैकिया में,
तो वो कफ आउट भी करेगा, प्लस हीलिंग के बाद कई बार स्टेनोसिस भी आ जाती है। तो अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो कई बार उसके जो वो नॉर्मल सांस भी ले रहा है तो आपको एक साए साए की आवाज आती है। ये ट्रेकियल स्टेनोसिस के कारण, यानी जब उसका मेन एयरवे ही कॉम्प्रेस हो जाता है तो ये हो सकता है। बट इट इज यूजली लेट, अगर आपने उसको ट्रीट ही नहीं किया, बहुत लेट प्रेजेंटेशन में ही ये आता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट में ये कॉम्प्लिकेशंस यूजली नहीं अकर करेंगे। अगेन इन द mediastinal lymph nodes, अगर वो कॉम्प्रेस करेगा ईसोफेगस को तो आपको डिस्फेजिया होगा, उसको निगलने में तकलीफ होगी। अगेन इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड पैल्सी, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाएगा। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो होर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी आवाज में बदल आएगी, खरखरी आवाज उसकी लगेगी। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑर्गन को वो इन्वॉल्व कर रहा है, आपका प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। सेम अगर आप पेरिटोनियल लिम्फ नोड में चले जाइए, यानी कि पेट में जाएंगे, अगर एब्डोमिनल लिम्फ नोड है, दैट टाइम्स देयर कुड बी अ compression of the lymph nodes which are compressing the lymph node involvement, which will cause portal vein thrombosis, can cause jaundice and portal hypertension. Again, these presentations are very rare. We usually present them, the abdominal TB lymph nodes will usually present with abdominal pain and a swelling and a distension of abdomen. That is the common presentation, but rarely they can present with these presentations as well. Extensive compression of renal arteries due to tubercular abdominal lymph node can result in renovascular hypertension also. Very rare presentations. However, you should be aware of these conditions in case the patient presents to you. Now, as we've already discussed, if the patient is immunocompetent, the constitutional symptoms are less. However, if the patient is immunocompromised, the patient can have cough, fever, sweat, weight loss, etc. But again, you should not forget that these patients are those patients who have latent tuberculosis and there is a reactivation. So the chances of reactivation and other sites like the pulmonary site is also possible, and patient can have simultaneously cough, fever, because pulmonary TB can and usually coexist with these extrapulmonary tuberculosis patients. So abnormal chest X-ray is frequently observed in such cases, and such patients are more likely to have disseminated TB with lymphadenitis at more than one site. Now, how do you diagnose? If it's plain lymph node, no other, just the use is cervical lymph node, what is the procedure? How you should go forward with the diagnosis? Simplest है, आपको एक lymph node दिख रही है, आप उसमें फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे। क्या करेंगे? उसमें एक निडल डालेंगे, जो भी एस्पिरेट आ रहा है उसको कुछ टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिससे नॉर्मली अगेन एफएनएसी से अगर आप साइटोलॉजी करेंगे तो आपको उसमें एएफबी पॉजिटिव लग सकता है, टीबी के क्लासिकल ट्यूबिकुलर लिम्फेडेनाइटिस के फीचर्स मिल सकते हैं, बट सेंट्रल नेक्रोसिस वाला पार्ट रहेगा, एपिथेलॉइड सेल्स रहेंगे। बट देन अगेन दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक, क्योंकि आपको माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्मेशन अगर एएफबी पॉजिटिव आया तो, बट दीज आर पॉसिसेल्युलर, यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, पॉसिबेसिलरी डिजीज होती है, तो चांसेस कि वो एएफबी पॉजिटिव आए साइटोलॉजी में कम होता है। बट आप ये जो सैंपल निकाल रहे हैं, आप जब सीबी नैट के लिए भेजेंगे, then if it turns out to be MTB detected, then you know that it is microbiologically confirmed TB lymph node. So there's these samples, when you do the FNAC, the aspirate should be sent for cytology, CBNAT and culture. Okay. Now there are certain cases where the aspiration is not effective. You are unable to make the diagnosis with fine needle aspiration. So next step would be your histopathology. That is, you after the you can do an excisional biopsy. Now, excisional biopsy for histopathology and microbiology evaluation has the highest diagnostic yield, क्योंकि पूरा का पूरा आपने lymph node ही निकाल के उनको दे दिया है. But again, first FNAC पे mostly with CBNAT available in the diagnostic algorithm of the TB lymph node, the need for excisional biopsy is very less.
The finding of caseating granuloma in histopathology is highly suggestive of TB, although it is not diagnosed since other diseases can also have similar histology. Mostly it is sarcoidosis can present with granulomas. Now these specimens, as you know, once you take this specimen, you aspirate, you should subject it to nucleic acid amplification testing. That is nothing but your CB-NAT, which you आप देख रहे TrueNAT करते हैं, CB-NAT करते हैं, वही है. So this can, why it is helpful? Because it is genetic, कम bacilli भी रहेंगे तो आपका diagnosis बन जाएगा. However, you should remember कि this is not a phenotypic, it is genotypic. तो अगर आप फॉलो अप में CB-NAT करवा रहे हैं तो उसका कोई रोल नहीं है. CB-NAT का रोल आपका सिर्फ डायग्नोसिस में आपको हेल्प कर सकता है, पर अगर आप ये सोचें कि आप फॉलो अप में लिम्फ नोड रह गया है, उसमें CB-NAT हम कर लेते हैं, वो पॉजिटिव आया, अब हमको ट्रीटमेंट और एक्सटेंड करना है, तो उसका रोल नहीं है, क्योंकि ये एक डेड बैसिलाई भी पिक करेगा. आपका ट्रीटमेंट आपने दे भी दिया, उसके बाद भी CB-NAT पॉजिटिव आ सकता है. सो रिमेंबर दिस कि CB-NAT का रोल सिर्फ डायग्नोसिस तक है, फॉलो अप में कोई रोल नहीं है. This should be underlined and kept in mind, please. This is very, very important. Now again, culture is the gold standard for diagnosis of TB, as you know, in sputum also and also in extrapulmonary samples. Culture permits drug susceptibility testing and must be performed to inform treatment decisions even if NAT testing is positive. So treatment decision के लिए अगर आपको change करना है, जो भी है, please, अनलेस ये है कि आपका पहले सेंसिटिव था, अब नैट में आपने क्या रेजिस्टेंट आ गया तो आप ट्रीटमेंट चेंज करेंगे. पर अगर सेंसिटिव है, सेंसिटिव ही आ रहा है, उस बेसिस पे आप ट्रीटमेंट चेंज नहीं करेंगे. उस टाइम पे आपको कल्चर ही देखना है, ताकि आप ये पता कर सकें कि वो जो आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो वाकई में अलाइव है, कि आपका जो CB-NAT है वो डेड बैसिलाई को पिकअप कर रहा है. Now, apart from these CB-NAT and histopathological diagnosis, what is the other things which you could do? As you know, TB infection is very, very common in India, and these patients are usually those patients where there is reactivation of tuberculosis. So the chances you have an lesion in the X-ray is very high. It is almost in 20 to 40% of these patients, and also in immunocompromised, it is still higher. So in these cases, you should definitely get a chest X-ray done. In case they have symptoms, का fever है, तब तो आप स्पूटम और एक्सरे करवाएंगे ही, पर अदरवाइज भी अगर आइसोलेटेड सर्वाइकल लिम्फ नोड से भी आ रहा है, आप उसको डायग्नोज कर रहे हैं, तो एक्सरे जरूर करवाइए, क्योंकि एज यू नो ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स में भी एक्सरे में कुछ ना कुछ लीजन आ सकता है, अगर भले पेशेंट को सिम्टम्स है कि नहीं है. It could be as simple as a disseminated lymph node. It could be a mediastinal lymphadenopathy. लेफ्ट हैंड साइड का आप एक्सरे देखेंगे, पैराट्रेकियल एक वाइडनिंग है, ये है टीबी लिम्फ नोड का, यानी सर्वाइकल लिम्फ नोड था पर साथ में एक mediastinal lymph node भी है. या आप ऐसे करेंगे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड था, एक्सरे करें राइट हैंड साइड में, उसको एक कंसोलिडेशन का पैच है अपर जोन में. सो दीज आर द वेरियस फाइंडिंग्स जब आपके एक्सरे में यू कैन गेट इफ पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू विद अ isolated lymphadenopathy. Ultrasound, again, it is not a regular feature which you should do, because बहुत obviously lymph node, but however अगर आप देखेंगे तो ये आप बीच का जैसे black part जो दिख रहा है, that is the part of necrosis. So sometimes it is difficult to localize. Deep seated जब आपके lymph nodes रहेंगे, abdominal lymph nodes हैं, कई बार deep seated रहते हैं, आपको sample लेना है CB-NAT का, culture का, उस टाइम पे ultrasound guided या CT guided आप ये investigations aspiration करके वो investigations के लिए लगवा सकते हैं. So that is only when it is required. Otherwise अगर easy access है, peripheral lymph node है, cervical, inguinal, axillary, वो बहुत easily accessible रहता है, बिना अल्ट्रासाउंड के भी सैंपल्स निकल जाते हैं. It is only in deep seated like abdominal tuberculosis that sometimes you would need to do an ultrasound for diagnosis and for treatment also. Now, what are the other diagnostic tools? Other diagnostic tools, as you know, this tuberculin skin test. This is the MON2 test जो हम कहते हैं. Sometimes you are
माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड आप नहीं बता पा रहे हैं, आपको एफएनएसी में आपको सजेस्टिव और ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड आया है, बट आप माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्मेशन एएफबी पॉजिटिव नहीं है, टीबी नैट पॉजिटिव नहीं है, आप मॉन्टू करके देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव है सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स टू कोलैबोरेटिव इफेक्ट देता है कि आपके 2-3 सिम्टम्स हैं, लिम्फ नोड है उसमें केजिएटिंग लिम्फ नोड, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा आ रहा है, मॉन्टू पॉजिटिव है, okay, you're slightly confident and you can start out, though this is not a necessity in making a diagnosis. Again, sputum smear and culture क्या है? Sputum smear and culture is needed because you know if the patient has radiological lesion है या patient has associated cough fever, तो आप definitely ये test भी साथ में कराएंगे. Now bronchoscopy sometimes it is necessary कि आप सैंपल लेना है, अगर आप देख रहे हैं कि सीटी में आपने कराया है, सबकराइनल लिम्फ नोड है, तो आप ब्रोंकोस्कोपी से टीबीएनए ट्रांस ब्रोंकियल नीडल एस्पिरेट करके सैंपल भेज सकते हैं. समटाइम्स ऐसे लिम्फ नोड्स हैं जहां पे आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, पेरिफेरल है, तो उस टाइम पे बस आप कर सकते हैं विच इज नथिंग बट एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड. बट ये सब चीजें तो पेरिफेरी पे हो नहीं पाएंगी. इन केसेस में आपको पेशेंट को हायर सेंटर पे भेज के ही, बट दीज यू शुड नो बिकॉज दीज आर द डायग्नोस्टिक ways in which these people you will help to get this sample from a site which is difficult to access. So what is the importance of radiological imaging? It is diagnosis a relative inaccessible site में आप you can go for diagnosis, access the extent of disease, evaluate response to therapy, detect residual infection after completion of therapy, help in a guided procedure like FNA and biopsy. इन चीजों में आपको radiological imaging कई बार help करती है. Now, this is just a flow chart of what we've already discussed. If the patient has signs and symptoms of lymph node TB, superficial lymph node रहेगा, आप उसको access कर सकते हैं, उसकी FNAC करेंगे, biopsy कर सकते हैं, उसको samples के लिए भेजना है. अगर डीप lymphadenopathy है तो आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, हमारे डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. एंड उसके बाद उसके अगर मीडियस्टिनल लिम्फेडेनोपैथी है तो आप ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ईबस कर सकते हैं. एब्डोमिनल लिम्फ नोड है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड एस्पिरेट ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस लिम्फ नोड के साथ अगर उसको बाकी सिम्टम्स में कफ फीवर भी है तो आप स्पूटम का एएफबी जीन एक्सपर्ट ये सब सैंपल्स आप इनमें साथ में उनका असेस करके भेज सकते हैं. Once you have sent these samples, ये साइटोपैथी सीबीनैट एएफबी कल्चर जो आपने सैंपल लिया वो किस चीज के लिए भेजेंगे? आप भेजेंगे सीबीनैट के लिए और कल्चर के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइटोलॉजी के लिए साइटोपैथोलॉजी से भेजेंगे. Now, how will you define once you've sent the samples and you get the results? So, when will you call it a bacteriologically confirmed lymph node TB case? Bacteriologically confirmed आप कब बोलेंगे? जब एटलीस्ट उस पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स तो है ही है कि उसको पेशेंट को लिम्फ नोड स्वेलिंग थी, ठीक है, फिर आपने कुछ ये टेस्ट भेजे जिसमें से या तो आपका जो आपने साइटोलॉजी के लिए भेजा है उसमें एक भी पॉजिटिव आ जाए, या आपने कल्चर भेजा था वो पॉजिटिव आ जाए, या आपने नैट भेजा था वो पॉजिटिव आए. कोई भी आपने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट अगर भेजा है वो पॉजिटिव आ जाता है. एक not that we require all three, any one microbiological test which is suggested that it is positive for TB mycobacterium tuberculosis, then it is a bacteriologically confirmed. यानी आपने bacteriologically confirm कर दिया कि वो जो lymph node TB है वो TB lymph node है वो TB के कारण ही बढ़ा हुआ है. पर कई बार होता है कि आपके कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो उस केस में आप क्लिनिकली डायग्नोज लिम्फ नोड टीबी को भी ट्रीट कर सकते हैं. Which would these be cases? क्लिनिकली डायग्नोज लिम्फ नोड टीबी कौन से रहेंगे? अब आपने देखना है कि पहले उसमें सिर्फ एक टेस्ट में पॉजिटिव आएगा तो चलेगा, पर क्लिनिकली डायग्नोज में शुड हैव all of the following. All of the following में क्या क्या है? नेगेटिव माइक्रोस्कोपी, नेगेटिव कल्चर, पीसीआर बेस्ड आपने सारे टेस्ट भेजे, सब नेगेटिव आया, बट स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, क्लिनिकल कोर्स आपने हिस्ट्री ली थी, लिम्फ नोड को एग्जामिन किया था, लिम्फ नोड की आपने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा, आपने रेडियोलॉजी किया, आपको पूरा लग रहा है कि ये टीबी के साथ है, and no other, you could not find any other cause of these signs and symptoms. क्योंकि यूजली अपने इधर नॉर्मली आपको याद रखना है कि बच्चों में लिम्फ नोड जो थोड़ा सा रबरी मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं उसमें लिम्फ नोड रह सकता है. एल्डरली में आप जैसे जैसे जाएंगे तो कार्सिनोमा एक मेजर कॉज बन जाता है. बट यूजली इन इंडिया टीबी इतना प्रिवेलेंट है कि द फर्स्ट
cause of lymph node is usually in 50% of the cases turns out to be tuberculosis only. So once you have diagnosed these patients to have lymph node TB, now what is the next? You need to treat them. Now again, treatment for lymph node TB, if it is drug sensitive, the drugs, as you know, are again those four first line drugs: INH, rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide. These two drugs are to be given for the four drugs are to be given for the first 2 months, which is what you called as an intensive phase, and then you follow up after continuation phase, which is the next 4 months, which is where you cut down the pyrazinamide and just give three drugs. This is INH, rifampicin, and ethambutol. So this is the standard which you are giving for PTB. So nothing, no other new drugs. But however, you should remember, आप जब PTB का ट्रीटमेंट करते हैं, आप 2 मंथ्स में उसका स्पूटम रिपीट करके देखेंगे कि वेदर वो पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, स्पूटम करवाते हैं. हाउ टू असेस द पेशेंट्स हु आर एक्स्ट्रा पल्मोनरी और लिम्फ नोड टीबी? In these cases, you have to assess the patient at 3 to 4 months. क्या उसके जो lymph nodes decrease हो रहे हैं साइज में, कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो जो पहले थे वो क्या कम हुए हैं कि नहीं है, कुछ नए lymph nodes आए हैं कि नहीं है. So there are things which you should see when the patient presents to you at 3 to 4 months. एंड फर्स्ट इज, अगर आपको लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लिम्फ नोड्स उसके जा नहीं रहे हैं, नए लिम्फ नोड्स आ रहे हैं और कुछ सिम्टम्स उसके डेवलप हो रहे हैं, सो थिंक वेदर वाकई में यू आर ट्रीट. इफ इट इज अ माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी, देन यू नो लिम्फ नोड टीबी, इट्स इजियर टू फॉलो अप बिकॉज यू आर श्योर दैट इट इज TB. But certain, most of the times you do clinically diagnose, so then you will have to rethink about your diagnosis, think whether it is treatment failure or there is another alternative diagnosis. ट्रीटमेंट फेलियर क्या हो सकता है? क्या पुअर एब्जॉर्प्शन तो नहीं है, हमें TDM के तो नहीं भेजना, या कोई ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो रहा है. और कई बार आप ये देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल डायग्नोस करते हुए भी 3rd-4th मंथ के आसपास न्यू लिम्फ नोड्स आते हैं. जो लिम्फ नोड्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं साइज में. आप सारे टेस्ट करके देखेंगे, सब कुछ सेंसिटिव आ रहा है, पेशेंट रेगुलरली मेडिसिन खा रहा है, सब कुछ. When you rule out other things, you realize it is just a paradoxical reaction, and these patients usually respond to a short course of steroids. तो ये patients को अगर आप short course steroids, but this you will only give after you're very sure you've ruled out there is no resistance development, or there's no treatment failure or an alternative diagnosis. Then only you think of this should be the last diagnosis of paradoxical reaction. Now, some patients with lymph node TB have residual lymphadenopathy at the end of the treatment. This does not mean that the patient still have active disease. If the lymph node, a lymph node of less than 10 mm, that is 1 centimeter से नीचे का lymph node है, that's a normal thing. You just need to stop the medication, need not think about it. However, there are certain times then when the patient, when you do follow up at 6 months, you realize that the lymph node is more than 1 centimeter, though it's responding. It has decreased in size, but it's still more than 1 centimeter. In these cases, you can extend the treatment for another 3 months. However, at this stage also, you should rule out any failure or development of resistance, and you should send in an FNAC biopsy, cultures should be sent. You extend the treatment because these are partial responders. Now for mediastinal, ये तो जो पेरिफेरी में आपको लिम्फ नोड बाहर दिख रहे हैं, उनको एक्सेस करना बहुत इजी है. पर कई बार जो लिम्फ नोड, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड जो आप एक्सरे पे देख रहे थे, जैसे हमने आपको फर्स्ट एक्सरे दिखाया था, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड था, उस केसेस में हाउ डू यू मॉनिटर? आप सीरियल एक्सरेस करके देखेंगे, लिम्फ नोड्स डिक्रीज हो रहे हैं साइज में, बहुत अच्छा. पर अगर नहीं हो रहा है तो देन यू अगेन एज विद द पेरिफेरल लिम्फ नोड्स यू शुड थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस. And when should you stop in these patients? अगर आप CT एक्सरे कर रहे हैं, अगर कोई भी लिम्फ नोड का जो साइज कम हुआ है पर वो स्टैटिक है, अभी पिछले 4 महीने से आप देख रहे हैं कि आपने रिपीट करके देखा एक्सरे, वो जो भी साइज पे आया है वो स्टैटिक है, as of now they say कि at 6 months you can stop that medication. Now this is what we've already discussed so far. So you have to assess the response to therapy. आपने एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, 3 to 4 months पे आप उसका असेस करेंगे कि इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर आ रहा है, सिम्टम्स उसके रेजोल्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ कंटिन्यू करनी है उसकी ट्रीटमेंट. However,
अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपने देखना है क्या लिम्फ नोड बढ़ रहा है साइज में, उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, उसकी कल्चर रिपोर्ट्स देखिए। फिर से अगर आप हिस्ट्री लीजिए कि आप क्या ये जो पेशेंट रेगुलरली मेडिकेशन ले रहा है, सब कुछ ठीक है, आपने एफएनएसी करिए, ड्रग रेजिस्टेंस रूल आउट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेडिसिन ले रहा है, सेंसिटिव ही आ रहा है, तो समथिंग कॉल्ड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, की यानी कहीं उसको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो नहीं है, वो आपने रूल आउट करना है। और अगर ये सब कुछ आपने करा, सब सेंसिटिव आ रहा, देन लास्ट थिंग लेफ्ट आउट इज paradoxical reaction. But these for, if there is development of resistance, if you think there is malabsorption and needs a TDM, or if you want to label it as a paradoxical, these things should be done at a higher center. आप periphery पे नहीं करेंगे, these have to go to a medical colleges. So medical college specialists, where people are sitting there, they will decide what exactly has to be done. So this is something which we should understand, and we should let the periphery people know about it. Now, when do you call as a resolution? Resolution of is decrease in the size of a lymph node with setting of systemic symptoms. जो उसको symptoms थे वो भी कम हो गए, lymph nodes का size भी कम हो गया. If it is less than 1 centimeter at the end of the treatment, आप बहुत confidently अपना treatment बंद कर सकते हैं. However, there is a delayed response or paradoxical reaction, which is nothing but increase in the size of a lymph node or any new sign or inflammation up to 3 months of starting the treatment, or appearance of a new lymph node at the same or other site. As I've already discussed, this should be the last way once you have ruled out resistance and other factors before you label it as paradoxical reaction. So that is what they may require tissue culture if not done to rule out treatment failure and resistance, therapeutic drug monitoring to ensure adequate drug levels. If cultures reveal susceptible TB, it is likely due to paradoxical worsening, may require an anti-inflammatory agent, or a surgical removal can be needed. Complications क्या हो सकते हैं lymph node TB का? Abscess formation, rupture, sinus formation, and a scar later on. Or for all these patients, you have to refer these patients to higher center who are non-responders, who need treatment for drug resistance, or there is a large nodal mass, abscess requiring drainage or surgical intervention. So surgical intervention आपको कब लगेगा? In patients who have discomfort with tense fluctuating lymph nodes. अगर बहुत ज्यादा बड़ा lymph node के साथ patient आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उसको therapeutic एक aspiration कर सकते हैं. Not necessary कि सिर्फ diagnosis click करना है, but remember it should always be a non-dependent aspiration. आप ऊपर से नहीं करेंगे क्योंकि वहां से mostly rupture site हो जाता है, वो patient का वो जो lymph node है वो rupture हो जाएगा and healing में बहुत trouble जाते हैं. So it always has to be a non-dependent aspiration of the lymph nodes. And when can you insert diagnosis and management if any deterioration on treatment? As we've already discussed, जहां आपको ऐसा लगता है कि 3 to 4 months पे आपका patient respond नहीं कर रहा, there is deterioration, so you may need a surgical intervention in the form of a surgical excisional biopsy. Sometimes what happens, you diagnose it as a case of drug resistant tuberculosis. In those cases, sometimes you may require, apart with drug resistant treatment, patient may require excision of the lymph nodes. Now, this was what we is a very simple thing, and whatever we've discussed, you will be able to understand more. I present one or two cases where you'll be able to see how we have progressed with the follow-up of these patients. So this is a 48-year-old female who initially presented with a left-sided cervical lymphadenopathy. She also complained of a chronic cough, but no other symptoms or systemic or pulmonary symptoms. No, क्योंकि lymph node था और उसको कफ भी था. जब कफ था तो इसलिए हमने उसका एक्सरे किया. So the radiograph showed left perihilar shadowing, but examination of chest was normal. ठीक है, she was not producing sputum. Her MON2 was 21 mm. अब इसके बाद उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी करी जिसमें एंडोब्रोंकियल ट्री मैक्रोस्कोपी के लिए तो सब नॉर्मल था. उसकी वॉश लिया लेफ्ट अपर जोन से और जीन एक्सपर्ट के लिए सीबी नेट के लिए भेजा, कल्चर के लिए भेजा. जीन एक्सपर्ट में इट शोड एमटीबी डिटेक्टिव, रेप सेंसिटिव. सो इट बिकेम अ diagnosed case of PTB for sure, and HIV serology was negative. Now, when you see this patient had cervical lymph node, after 4 months जब हमने उसे assess किया,
उसका आप देखेंगे कि एक्सरे में वर्सनिंग ऑफ कोर्स लेफ्ट हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर ओपेसिटी रही, और ये पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे थे, कफ इसको ज्यादा होने लगा, ब्रेथलेसनेस हो रहा था। तो जब हमने उसका सीरियल एक्सरे फॉलोअप किया तो उसका धीरे धीरे लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स, आप नेक्स्ट सी में जाएंगे तो लेफ्ट ऊपर की ओपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, उसका अपर लोब कोलैप्स होता जा रहा है। Now, इस टाइम पे जब कोलैप्स हो गया, so we at 4 months there is definitely clinical रेडियोलॉजिकल डिटोरेशन। जब क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल डिटोरेशन हो गया तो आपने सोचना है क्या आपका ट्रीटमेंट फेल हो रहा है या पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। पेशेंट सेज कि हम तो रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू आर वेरी श्योर, नाउ व्हाट टू डू विद दिस कोलैप्स, नाउ यू गो इन फॉर अ ब्रोंकोस्कोपी। तो हमने ब्रोंकोस्कोपी की बिकॉज हमको ये था कि ये रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप कर रही है। So when we did a bronchoscopy, this is what we saw कि left upper lobe का bronchus was completely obstructed by the lesion, और वो हमने वहां से washings ली। Washings जो हमने ली was negative for AFB, expert also was negative, यानी कि CB net भी negative आया। Now CB net negative, culture negative सब आया, तो हमने इसको diagnose, अब when we were very sure there is no other diagnosis, कोई malignancy नहीं आई, CB net negative आया, we labeled it as paradoxical reaction, gave steroid, and the patient responded to treatment, and this was the treatment and for this patient we could stop the medication at 6 months. So जो थोड़ा सा lesion था उसका वो बड़ा, और it was collapse which was causing the symptoms, not the disease which was causing the symptoms, and this was the normal at the end of the treatment. So this was one of the cases of paradoxical reaction. Now this is a second case where a 20-year-old female presented to the OPD with a right cervical lymphadenopathy. उसमें हमने नेट किया, रिफैम्पिसिन सेंसिटिव था, नो अदर ट्यूबरकुलर लीजन नहीं था उसका, कोई उसको कफ नहीं, कोई फीवर नहीं, एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल। After 2 months of treatment standard, the patient was asymptomatic and the lymph node was not palpable. 2 months पे patient बहुत अच्छी आई फॉलोअप में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, कोई lymph node palpable नहीं था, symptoms भी कोई नहीं थे। But towards 5 months of the treatment पे the patient developed a lymph node in the left axilla, और expectoration भी उसको डेवलप हुआ। ये लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड है और राइट अपर जोन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कैविटरी लीजन है। अब ये पेशेंट का जब नए लीजन्स आ गए, आपने एसेस किया, एफएनएसी जब हमने लिम्फ नोड की, एएफबी पॉजिटिव विद एपिथेलियोइड सेल ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, सीबी नेट भेजा, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस डिटेक्टेड आ गया। मिजेट में भी सेम रेजिस्टेंस टू रिफैम्पिसिन एंड आईएनएच आ गया। अब स्पूटम था, स्पूटम का सैंपल हमने भेजा, उसमें भी रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस आ गया। सो दिस पेशेंट डेवलप्ड रेजिस्टेंस and the treatment was then changed to a MDR regimen, which the patient responded to after treatment. So this is how you have seen that though it seems to be a simple thing, but whenever there is deterioration of any kind, please go and rule out resistance, rule out treatment failure, and then you can label it as alternative diagnosis. These things should be ruled out. Then maybe a short course of steroids definitely help in these patients. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Dr. Sethi. Very, very informative talk today. At least I have learned a lot in this talk. Thank you so much. And as we all know, कि index TB guidelines आ गई हैं अब for management of extra pulmonary TB. तो as program people हम सबको वो guidelines जरूर देखनी चाहिए. And TB lymphadenitis is a part of it. So are there any questions, queries, comments regarding the talk? The forum is open. Anybody can ask a question or comment. Yeah, Dr. Ritu. Just one comment that the sensitivity of IR is not usually put by midget, it is put by LP only, just for the correction of the audience. Because as per the program, INH and rifampicin is not being done by culture, just for that clarity. And you get an additional information also. Thanks. Okay, thank you, Dr. Ritu. Any other questions or comments?
So basically, Dr. Sethi, before we think of TB, बच्चों में हमने देखा है कि बहुत commonly lymph nodes होते हैं. छोटे बच्चों में, especially school going children. तो should we straightway think of TB, or should we try something else before thinking of TB? Ma'am, as I've already said earlier also in the talk, that in children, lymphoma is one of the major causes of lymphadenopathy. पर उस टाइप के when you आप जैसे जैसे पेशेंट्स देखेंगे, you realize the kind of lymph node when you examine in TB lymph node is matted. 2-3 इकट्ठे एक साथ आप फील करेंगे, लगेगा. और जो पेशेंट लिम्फोमा का होता है उसकी थोड़ी सी रबरी कंसिस्टेंसी रहती है. दूसरा ये है कि टीबी लिम्फ नोड में हिपैटोस्प्लिनोमेगाली नोन है, पर इतनी ज्यादा आपको दिखेगी नहीं, इतनी पैल्पेबल नहीं रहती. पर अगर कोई लिम्फोमा का केस है, कोई बच्चा लिम्फोमा वाला है, उसमें मैसिव हिपैटोस्प्लिनोमेगाली मिलती है. So these two things definitely, clinical examination is very important in these cases. And then of course आपके symptoms तो दोनों में weight loss, fever वो ही रहता है बच्चों में. But एक clinical examination हिपैटोस्प्लिनोमेगाली अगर रहा, depending upon कितनी बड़ी है, mostly in lymphoma it is very large, and then FNAC definitely gives you the diagnosis. अगर आपको FNAC में भी difficulty जा रही है, diagnosis में आप नहीं कर पा रहे हैं, then excisional biopsy is the best in such cases, because excisional biopsy will definitely give you diagnosis of either a lymphoma or this TB. So that is how it helps. Clinical examination and microbiology, these definitely help in diagnosis. Yes. Because sometimes in OPD ना छोटे बच्चों को लेके आते हैं, school going children, and they sometimes have small lymph nodes here and there, which can be due to any infection. Ma'am, so again, that is what I'm saying. So less than 1 centimeter, we've already discussed, has no significance. However, patient आपके अगर ये मौसम में जुकाम खांसी, so with these symptoms also you will definitely have lymph nodes. But again, then that is where your history taking helps. In TB lymph nodes, it would be a longer chronic history. In such cases where they are small and the patient is giving you history of cough, fever of a week, 10 days, then definitely an antibiotic course will definitely help. Then in spite of your antibiotic coverage, if the lymph nodes persist and other symptoms, then you can go in for FNAC. But if it is just a 10 days history, patient is having cough, or you definitely have some source of infection, either it could be their head, scalp, or it could be tonsils, then you can, again, I would reiterate that clinical examination, clinical history is very important in any case, any case. So these are short history and acute history. These things would definitely help in diagnosis of non-tubercular lymph nodes. Thank you, Dr. Sethi. Dr. Ritu, your hand is still up. Do you want to make another comment? No, ma'am, it's a question. If you allow me to ask, Yeah, that is sure, a comment. sure. Yeah, sure. So this is my one request also, because one thing is there, for proper diagnosis, we need a proper sample. So often when the lymph node aspirate is being sent, we found that from biopsy, the yield of expert and even the culture positivity is way higher. So biopsy can be sent, it's wonderful, but even if the aspirate is to be sent, it should be sent in the adequate volume without adding the diluent. So usually what happens is that in the centers, people add diluent to it. So because in lab, when we are doing the processing, in any case, we are going to put the right kind of a diluent, not the diluent which has to be sent from the center. So it's just again a small thing which I just thought should be added. Yeah, so for sending the sample, we should always send it in normal saline, any sample that has to be sent to the lab. So only if it's biopsy, because we don't want the biopsy to dry, but if it is an aspirate, then it can come as it is without adding a diluent. Okay. Thank you, Dr. Ritu. So, yeah, there is a feedback form in the chat. Everybody is requested to follow that link and give us the feedback. What Dr. Sethi has told today is, that once we see a lymph node, we have to do proper history taking, do a good diagnosis, try to take any sample possible, wherever possible, to
diagnose TB, to diagnose whether it is drug sensitive or drug resistant. So all efforts should be made to come to a proper diagnosis, number one. Number two, once you diagnose, treat the patient properly, even if the lymph nodes regress after 1 month or 2 months, full course of treatment has to be given to the patient. Also, what we learned from the case is that we have to keep a watch. Most of the time, what happens is that once we start the extrapulmonary patient, we don't even look at the patient again, especially in the field. Patient is just given treatment for 6 months, though he may be developing cough, though he may need a X-ray. So we have to keep a rigorous follow-up, see to it if there are any new symptoms coming, we should do the X-ray. It is part of our guideline to do the X-ray whenever there is a cough. If an extrapulmonary patient is developing cough, we have to do an X-ray. So we should do a rigorous follow-up and complete the treatment and follow up the patients as per guideline. So with this, I thank Dr. Sethi, who has, so nicely explained us about TB lymphadenitis today. Thank you, Dr. Sethi. Thank you so much. And thank you all for attending the session. And we will have next session soon. We'll post the information in the group as well as by the mail. Thank you, and please give your feedback in the chat box. Thank you so much. Thank you. We'll keep the session running for another 2 minutes. Till then, I request all of you to please share your feedback. The link is in the chat box. Thank you.